अब बारी है, मैं चाहूँगा कि मैं इनवाइट करूँ मेरे बहुत अच्छे बड़े प्यारे भाई फराज सलीम, हु इज़ फ्रॉम प्रेयर स्टोन पीपल्स चर्च। बड़े खूबसूरत स्पीकर हैं, ब्रैम्पटन क्रिकेट लीग के प्रेसिडेंट हैं, एंड मच मोर। सो प्लीज वेलकम फराज सलीम। What I want to ask you to do, जब आप टेबल पे जहाँ बैठे हैं वहाँ पे आपके सामने एक रेड कलर का क्यू कार्ड पड़ा है। अक्सर ऐसे होता है, अभी लास्ट वीकेंड आई वॉज एट एन इवेंट, तो किसी ने कहा कि हमारी बेटी की जो है शादी है, इसके लिए कोई लड़का ढूंढे अच्छा। एंड वी सेड, ओ आपने जेनेसिस मैट्रिमोनी का नहीं सुना? जेनेसिस मैट्रिमोनी, व्हाट्स दैट? I said you were there. जब अनवर खान साहब उनकी फैमिली आई, उन्होंने अनाउंसमेंट की एंड आपने उसको नोटिस नहीं किया। So my request to you is that when something like this starts, it requires a lot of effort. अभी उन्होंने कहा कि 5 साल उन्होंने लगाए to put this together. आप अगर इस मॉडल को देखें तो a lot of you at home use Amazon, a lot of you at home use Uber. So this model itself should not be restricted to this room only. जब आप बाहर जाएं तो इसको शेयर करें, इसको याद रखें, आगे लोगों को बताएं, ताकि जो हमारी कम्युनिटी में अभी जो गैप है, स्पेशली I do a lot of work with church with young people, और अक्सर ऐसे बच्चे हैं who were in diapers who have now gone to universities, और अभी सुंदरला जी ने बात की, बहुत अच्छी की। We also tell them in marriage picking a career is important. मैंने उनको अक्सर ये मैसेज दिया कि from all of you we have 26 youth members. अगर हाई स्कूल में कोई हमारे पास आके कहेगा कि मुझे तो प्यार हो गया, मैं शादी करना चाहता हूँ, I will not come to your wedding. Importance for you is getting a career, be financially stable, know the world, enjoy the world, and then be engaged in the future. Because अक्सर चीजें हम ऐसी सोचते हैं, हम गाड़ी ले लेते हैं, हम घर लेते हैं, हम अच्छे कपड़े लेते हैं, but we don't realize that we don't live in the times where you would live for 1400 years. We have very little time, और chunk of that time will be spent as a married person. और उस टाइम के लिए financial stability, career stability, especially in the West, without that you will have a difficult marriage. और अब वो बच्चे ऐसे हैं कि they have come on to be young adults in their life, university degrees ख़त्म कर ली, and now they're thinking about the next steps in their marriage. And अभी बरकत गिल साहब ने बात की कि अक्सर ऐसे होता है कि you can look at within your community, लोग चर्चेज आते हैं, फिर कहते हैं जी कोई लड़की है, कोई लड़का है तो बताएं. But a challenge for parents is bring your children to churches when they are young. Don't bring them when they're 26. They will not have a deep connection with friends in their community. I've been married for 17 years. My wife and I met through a church platform. We both come from backgrounds where church was the center of our marriage. And I feel personally that uski wajah se our marriage is happy and successful because God, the church community, the extended community was at the center of that marriage. So when you are looking at marriage for your children, start planning at a young age. और अगर आपने वो मिस कर दिया गया, is now being filled with Genesis matrimony. So request once again, जब आप बाहर जाएं, इस मॉडल को, इस इनिशिएटिव को प्रमोट जरूर करें. You know, the family and the organization put on a nice setup for you. You will have dinner tonight, you have fellowship. Don't forget it. Your model of networking, जब political campaigns होती हैं तो $10,000 की लोग टिकट लेके आते हैं, इवेंट पे बैठते हैं, लोगों को सुनते हैं. We've been engaged in some political campaigns where $5,000 की टिकट थी, but you come for network. But when you go out, you spread the message. और यही मैसेज आप लोगों के साथ भी है. What I would like to request is promote the model, bring your children to church early on in their years. So अगर उनको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर चर्च कम्युनिटी से मिलता है
so they will have a very successful marriage. And if they miss that piece, then you have Genesis Matrimony and the team to help you get ahead in life, because as I said earlier, more than 50% of your life will be spent as a married person, and it's best to have that as a quality life in your life. God bless you and thank you for giving me the opportunity, and we'll see you after dinner.